Hello students, how are you all? In last lecture we studied conductance, conductivity, resistance, resistivity, etc. We also studied the definitions of electrolytes and the conductivity of electrolytes. Now we have to study the types of conductivities, which is a very important topic in electrochemistry. Types of conductivities. Actually, we are going to study two types of conductivities here. Molar conductivity and equivalent conductivity. These two types of conductivities we have to study in electrochemistry. The symbol of molar conductivity is lambda m. Lambda is written in lower case as follows, and it can also be written as in this form in uppercase. This is uppercase lambda, this is lowercase lambda, both are correct. And equivalent conductivity is mentioned by the symbol lambda eq, or in uppercase lambda eq. So you have to study these two types of molar conductivities. Let's start them one by one. Firstly, we will learn molar conductivity, then equivalent conductivity. Okay. What is molar conductivity? As the name indicates, that it is related to the number of moles of an electrolyte, as molar conductivity word is there. So what is it all about? Actually, to understand this concept easily, we need to focus on the relation between conductivity and concentration of an electrolyte. Suppose this is a solution. This is a solution of NaOH. This is the aqueous solution. Suppose the volume of solution is 1000 ml, and the amount of NaOH which is dissolved in this solution is 4 gram. Now, how to apply the concept of molar conductivity, or how to find the molar conductivity of this solution? So just pay attention to the definition. The definition of molar conductivity says that the conductivity of all electrolytic ions which are formed by dissolving 1 mole of that electrolyte in any volume, that is V. मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि कोई भी वॉल्यूम V हो जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो, उसकी जो भी कंडक्टिविटी हो, उसकी जो भी कंडक्टेंस होगी, उसी को हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी. तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या कंडीशंस हैं. पहली बात, वॉल्यूम विल बी V, बट दिस वॉल्यूम should be in the amount that is sufficient to dissolve 1 mole mass of the electrolyte. Suppose आपने V लिया है, कितना V लिया है आपने 100 ml, लेकिन अगर 100 ml V किसी सब्सटेंस के 1 मोल को डिसॉल्व नहीं कर सकता है तो वो V नहीं लेंगे. The value should be V will be greater than the minimum dissolving value. का मतलब कम से कम उतना तो होना चाहिए जिसमें कि 1 मोल डिसॉल्व हो सके. ये आप ध्यान में रखिए. देन amount of electrolyte should be 1 mole. Okay, and you have to measure the conductance. Whatever is the conductance of the electrolyte which is 1 mole in amount,
and the value of solution is V, that will be called molar conductivity. So you can write that conductance of 1 mole electrolyte dissolved in V volume is called मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एन। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि यहां ये है 4 ग्राम, सोल्यूशन है 1000 ml, तो ये 1 मोल कहाँ है? ये 1 मोल नहीं है, ये तो m/10 है, m/10 मोल्स है। तो 1 मोल कहाँ है? 1 मोल कंसीडर हो जाएगा कैसे? 4 ग्राम है 1000 में, तो 40 ग्राम किस में होंगे? 10,000 ml में होंगे। 4 ग्राम है 1000 में, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि 40 ग्राम जो है वो होगा किसमें? वो होगा 10,000 ml में, 10 टाइम्स ग्रेटर। ओके, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब न्यू क्वेश्चन है, द क्वेश्चन अराइजेस कि सो फार आई हैव नॉट लेट यू नो अबाउट द फॉर्मूला टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी। ये सब तो थियोरेटिकल बात है, लेकिन पता कैसे लगेगा कि वो कितना होगा? देखिए सर, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। द फॉर्मूला इज लैम्डा एम इज इक्वल टू के मीन्स कंडक्टिविटी एंड वी। नाउ इट इज वेरी इजी टू find the value of lambda m. Firstly, you need to find the value of k. If you find the value of k, then you know what is the concentration. We know the concentration 4 gram in 1000 ml, and this V means the volume that contains 1 mole. The volume will be 10,000 ml. This V will be 10,000 ml. So if you find the value of k, then you have to find the value of V. Suppose any value is given, then you calculate in this manner that 4 gram is in 1000 ml, 40 gram will be in 10,000 ml. This is how you can find lambda m. One more formula is there, the modified formula. What is molarity? M. Molarity means Wv by Mv into 1000 by V. Here, according to definition, this value will be 1. Wv by Mv means Nv. This is Nv. Nv is equal to 1. Then M is equal to 1000 by V. What is the value of V? V is equal to lambda M into K. V is equal to lambda m by k. So what will be lambda m? Lambda m will be equal to k into 1000 by m, molarity. This is how you can find the value of lambda m. But definition is more important than formula. Learning the formula by heart is not the solution to the problem. First focus on the definition, then you can derive the formula easily. Okay, now the unit of lambda m. Unit of k is ohm inverse centimeter inverse. Unit of m, mole per liter, or we can say mole per centimeter cube, means ohm inverse centimeter square and mole inverse. This is the unit of lambda m. Another unit, mho, centimeter square, mole inverse. One more unit is there, C1, centimeter square, mole inverse.
Considering this formula, we can draw a fact. If the molarity of a solution is more, if the molarity of a solution is more, then what will be the effect? The effect will be the lambda will be less. Means अगर concentration ज़्यादा है, अगर ज़्यादा concentrated electrolyte है तो molar conductivity की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कम होगी, और डाइल्यूशन अगर कर दें तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जरा यहां पर फोकस कीजिए कि अगर लैब में आपको मोलर कंडक्टिविटी किसी गिवन सॉल्यूशन की निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? What's the lab method to find the molar conductivity of a given electrolyte? Actually, conductivity cell is used. This is conductivity cell which is used to find the resistance. Okay, and meter bridge is used in this process. In physics, students have operated meter bridge. In chemistry also, meter bridge is used in some cases. This is meter bridge. One meter wire is there. 3 metallic plates are there. Resistance box is attached between these two plates, and conductivity cell is connected between these two plates in this manner. This is conductivity cell. These are two plates. It is placed in a thermostat to maintain the temperature. Electrolyte is there in the conductivity cell. Okay, and here is induction coil. This type of induction coil is there. And here is a wire. This is jockey, and these are headphones. These are headphones. In physics, when you use meter bridge, you use battery, because using the meter bridge you find the unknown resistance. But here induction coil is used and AC current is used. Here headphones are there that provides information about the null point. As you know that this meter bridge acts on the principle of Wheatstone bridge, and you must have learned this formula R upon S is equal to, suppose this is AB wire and this is point C, then AC upon BC. Okay. Using this type of formula, you can find the R of this conductivity cell. Okay. Then you will find the R you will take a reference conductivity value of KCl. KCl has the value of K 0.001412.
This is the value of K for KCl, Siemens centimeter inverse. This is standard value of K for KCl when concentration is 0.01 m. Okay. Now we have found out the value of R. The value of R for KCl. Now we know the value of R for KCl, the value of K for KCl, and this is how we can find the cell constant L upon A. In electrolyte, we cannot find cell constant directly. It's a method to find out the cell constant. Firstly, we found out the value of K, it is standard, and then we found out the value of R for KCl solution. This is R for KCl, this is K for KCl. Now we are able to find the value of L upon A, that is cell constant. Now we will put this value in the equation for any other electrolytic cell. Suppose we will apply same process for other electrolytic solutions. Suppose this is acetic acid, and we have found out the value of L upon A. Now we can find the value of K for acetic acid. This cell constant is related to this formula. This is for KCl, this is for acetic acid. Now we can find the value of K. And when we find the value of K, it is very easy to find the value of B by just observing the concentration. This is how we can find the value of lambda m. This is how the value of lambda m is calculated in chemistry lab. Okay. Now, on dilution, the value of lambda m will increase, as we just saw that m concentration is inversely proportional to m. On dilution, it will increase. On increasing concentration, it will decrease. Next topic is equivalent conductivity. Equivalent conductivity. Lambda m, it can also be written as EQ. Lambda EQ. What is equivalent conductivity and how it is related to molar conductivity? Equivalent conductivity is the conductance of electrolytic solution when one equivalent of substance or electrolyte is dissolved in V volume of solution. जब एक इक्विवेलेंट उस इलेक्ट्रोलाइट का V वॉल्यूम में डिसॉल्व किया जाता है, तब जो भी कंडक्टेंस होता है उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं. इसका फॉर्मूला वैसा ही है, लैम्डा EQ इज इक्वल टू K इंटू V. लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इक्विवेलेंट का मास मोलर मास के इक्वल भी हो सकता है और उससे डिफरेंट भी हो सकता है. अगर इक्वल है किसी भी सब्सटेंस के लिए उसका इक्विवेलेंट वेट और उसका मोलर मास, तब लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा EQ होगा. जैसे NaOH, HCl, NaCl, इस तरह के जो सब्सटेंसेस है, फॉर दीज सब्सटेंसेस द वैल्यू ऑफ their equivalent weight is equal to that of their molar mass. तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उनके लिए
लैम्डा एम लैम्डा इक्यू के बराबर ही होगा। लेकिन अगर इन्हीं सब्सटेंसेस में ये डिफरेंट हैं तो उनमें इनकी वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। एक बात आपको पता होगी कि इक्विवेलेंट वेट जो है इस सब्सटेंस का, अगर वो इक्वल नहीं है उसके मोलर मास के, if equivalent weight is not equal to the molar mass, then equivalent weight will be less than that of molar mass. ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट वेट जो है वो है 49 ग्राम और इसके लिए मोलर मास है 98 ग्राम, just double. Okay. In the same way, for KMnO4 in acidic medium, equivalent weight और मोलर मास की अगर हम कंपेयर करें तो मोलर मास है इसका 158 और इसका फिफ्थ पार्ट है यहाँ 31.6 अप्रॉक्स, इतना फर्क है, फिर 5 टाइम्स ग्रेटर है उससे। ये KMnO4 का हो गया। अगर हम ऑक्जेलिक एसिड का देखें तो ऑक्जेलिक एसिड में भी जस्ट वैसे ही, इसमें ये पूरा 2H2O होता है, मोलर मास है 126 ग्राम और जो इसका इक्विवेलेंट वेट है, ये इक्विवेलेंट वेट इससे जस्ट हाफ है, कितना होगा 63 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास अगर इक्वल नहीं है तो इक्विवेलेंट वेट ही उससे कम होगा। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे रिलेटेड है मोलर मास से, ये सारे सोल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। खैर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम यूज करते हुए इसको मोलर कंडक्टिविटी से कैसे रिलेट करेंगे, जरा देखें। जैसे हमने वहां पर डेराइव किया था, इसको भी डेराइव कर सकते हैं हम। इस फॉर्मूला को डेराइव फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दैट लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू के इंटू वी की वैल्यू लिख देंगे। तो वी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहां पर n, फिर यहां पर आएगी 1000, ये वैल्यू आएगी यहां पर v की। कैसे आई वैल्यू, नॉर्मेलिटी की वैल्यू से। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय v। इसकी वैल्यू 1 है, 1 इक्विवेलेंट, तो बचा क्या 1000 बाय n इज इक्वल टू v, तो ये यहां पर आ गया, ये आ गया। अब देखेंगे जरा इसकी यूनिट, ये बिल्कुल वैसा ही है। The unit is the value of k. The unit of k will be ohm inverse then centimeter inverse. Unit of n equivalent per liter means per centimeter cube, means ohm inverse centimeter square equivalent inverse. Then mho centimeter square equivalent inverse. Then Siemens centimeter square equivalent inverse. These are the units. बिल्कुल सेम टू सेम। अब हमको ये देखना है कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, दिख रहा है, on increasing the normality or concentration of electrolytic solution, the value of equivalent conductivity decreases, and if dilution is there, if dilution is done, then it will increase.
इतना सब कुछ पढ़ने के बाद इन दोनों कंडक्टिविटीज में यानी लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू में रिलेट कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए।